Fine friends, I will be talking about polity, that's right. We all know, good morning Preeti, good morning Monica, good morning Yamini, Anjana, Ekta and everyone. That's great. Good morning Anand, Nishi, good morning. Let's now start. Good morning everyone. Fine, let's start. See children, whenever we talk of polity, okay, try to understand that why UPSC is giving that much emphasis on polity. That has to be understood first when we enter into the subject. Okay, you all must be knowing my name. My name is Dr. Manoj Kumar Sharma. That's right. So let's now understand it. Polity, if I say, is the description about the arrangement of power that a society is having. So if I say what is polity? Polity is all about the power arrangement in a society. Now, this arrangement can be good also, this arrangement can be bad also. Like polity in USA, polity in India, polity in Afghanistan, polity in Pakistan, okay. So, some of the examples will be of bad polity, that's right. Why UPSC is asking this much? Because a society for all its functions is largely dependent on that how its power arrangement is rationalized. What is the legitimizing premise in a society related to the power? Now, this power arrangement, when I see it, must be having some source. So, when I say polity, so in basic thing, what you should understand, it is about power arrangement in a society. So, given society, hai beta? So, it will be a given society. Description, it will be fixed. When I say polity in Afghanistan, fixed. So, now the question will arise that what makes polity good and what makes polity bad. So, it means for your examination purpose, my children, it will always be that they will be asking you the features associated with good polity. For your mains purpose also, they will ask you, do you think now we should make further codes in it or elaborate codes in it like privileges of MPs? That's right. So, the question always be about good polity. So, what will be the features of good polity? Bad polity is very easy. Alauddin Khilji's times, bad polity. Afghanistan, bad polity. Okay. So, whenever the principles will not be there, whenever the things will be based on whims and fancies, whenever the things will be based on despotic tendencies, it will be considered bad polity, correct? So, it means the reverse is true. Whenever the things will be well defined, when the power will be used on the basis of some legal or rational premise, when the powers are not despotic, when there are arrangements to control the authority, these will become examples of good polity. So, when we study it, whenever we go for studying any subject, always try to have an idea of, सर जब दूसरे बंदे का माइक या वीडियो में मूवमेंट होता है तो ओके यू प्लीज आंसर ओके. So when we are understanding it, you need to understand that UPSC will be asking you that do you think the legislative debates in India are rich enough, or do you think that we should provide some sort of qualifications or training for our MPs or MLAs? Such type of questions they will be asking. They will be asking you that whether we are reduced to ballot box democracy,
What can we do to improve democracy? Mains questions, GS paper 2. That's right. And in prelims, they will be asking you the very same thing, that how do you actually analyze the features of democracy? Which of the following are the expression of democracy in India? Okay. So, it means I need to know what are the good features, and then I need to see how they are applied in India. What are the sources related to them? This is what we will be reaching. Correct, friends? So, let's again start understanding polity. This is your first class, so no worries. Let's once again start understanding polity, that what polity refers to. So, when I say that polity refers to the power arrangement, you also need to understand that there must be some larger arrangement sometimes, and within that a polity may allow sub-arrangements also. There may be one arrangement, there may be another arrangement, there may be another arrangement. Okay? The outer ring will provide the guiding principles, and the inner ring may be provided with certain exceptions like ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC. ठीक है बेटा, क्लास पहली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको सीखना कम है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आसान सी बातें हैं. व्हाई दे आस्क TAC? व्हाई दे शुड आस्क? व्हाई दे शुड आस्क अबाउट शेड्यूल 6 समथिंग अबाउट? शेड्यूल 5 में अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है तो वहां से क्या पूछेंगे? व्हाई डू दे आस्क? दे आस्क बिकॉज फॉर लार्जर थिंग देयर इज वन पॉलिटी. Okay, certain principles and certain exceptions are allowed at the subordinate levels or sub areas. Sub polities भी allowed हैं. And if it is diversity, you need to allow. Today's, if you have seen the judgment of Honorable Supreme Court, the judgment is stating that states have the right to sub-classify within SC/ST कोटा. बहुत बड़ी बात है, आने वाला है आपके एग्जाम में नेक्स्ट ईयर. ओके, दिस ईयर्स मेंस दे में आस्क. So if any one of you or your friend is appearing for mains, be ready for this question because it's a very big judgment, landmark judgment है बेटा. Till now we were thinking that any changes, anything will happen only by the center or center's intervention. It's not possible for a state. But the state has been saying that, sir, it is a development agenda. When we have a schedule caste means a schedule of certain castes and development for them. So, sir, why we should not be allowed? That's right. So, sub-polity. Getting it? So, first of all, we will understand what is larger polity and then we will see. Arjot Kaur, your voice is not audible. Hamara okay hai. Beta, ours is okay. Just check your connection because others are able to hear. Okay. Fine. चलिए अब समझना शुरू करते हैं what is polity and we will write something also. Okay, because otherwise I will speak and later on you may not be able to recollect. दो चार पॉइंट्स पहले पॉलिटी पे लिखेंगे, फिर हाउ वी रीच गुड पॉलिटी उसको लिख लेंगे, सो दैट वंस वी हैव रिटन ऑल दैट देन वी विल हैव अ कॉन्क्रीट पाथ दैट ओके दिस इज माय ब्लूप्रिंट एंड दिस इज नाउ आई विल बी ट्रेडिंग. ओके, सो दिस इज यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी. मुस्कान, पॉलिटी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. ओह ग्रेट, तुम तो मुझे टेस्ट करने वाली हो मुस्कान, है फेवरेट है तुम्हारा. चलिए एनीवे दैट्स ग्रेट. That's great. Let's understand it. So, बेटा polity is कुछ पॉइंट्स बनाते हैं. What is polity? ये हेडिंग बना लेते हैं. ठीक है? What is polity? And then we will write about it. So, first of all, ये पता होना चाहिए भाई ये है क्या.
what is polity. That's right. So now please write. ऊपर करना है, ठीक है ना मेरी तरफ से? ओके, हाँ. Polity, please start writing. Polity can be best understood, polity can be best comprehended in terms of the arrangement of power that a state oblique society has given to itself. Okay. Next point. Analysis of polity Liang Tong, you please write the second sentence, later on I will repeat, okay? Now, analysis of polity provides us with an idea. Analysis of polity provides us with an idea that what is the mechanism for law making in the society, making of law, legislation, law making in the society, comma, application of law in that society, and how the disputes are adjudicated in the society. So children, you can understand, we try to know the legislative system of the society, we try to understand the executive arrangement of the society, and we try to understand the judicial or judiciary arrangement of the society. What are the powers with them? What is the arrangement for checks and balances? How do we ensure that they do not become despotic? What are the controversies associated with them? This is our polity syllabus. ठीक है? So polity it means learning these three things. How are they done in the society? Whether only judiciary is doing or some other arrangement is there, like lok adalats beta, okay, tribunals, lok adalats, consumer courts, questions of pre and questions of mains, they can ask you. So they ask you things to identify that how much you are aware that we are examples of good polity. And how will you know that what is the example of good polity? When you will know that what will make
a polity a bad polity. Okay? Like you all must have heard the term ordinance, adhyadesh. All of you have heard this term? Tell me yes or no. Can we have their mics also on if they switch on their mics? Are they allowed? Fine. You can talk. You can talk also. See, make this online class also an offline experience. Participate. Then children you will learn. Yes, please. Good afternoon. आवाज कम करो. Fine, now it's okay. Beta, once again will you come? What you said? No worries, once or twice it will happen, otherwise it will happen. You are not having good connectivity? If it will be there, I am here to help you, don't worry. Okay? I am not in a hurry to finish the things. My idea is that 18 out of 18 or 16 out of 16 your questions should be correct. Okay? And you can ask the predecessors of yours, the previous students. So don't worry about that, that I will take care. Try to participate. I am saying, you have heard the term ordinance? All of you, huh? Yeah. Correct. Now, ordinance will be an example of good polity or bad polity. Ordinance will be an example of good polity or bad polity. Try to think. I have not taught you till now. सोच के देखो कि सर अध्यादेश जारी करना will make good polity. Nitya Gupta, good polity. Everyone is writing good polity. No beta, it is bad polity. Why? We will understand. It is only a stopgap arrangement. Okay? Yes, only for, so it should not be a regular practice. Only a stopgap arrangement. So ordinances ideally shall not be issued. They should not be used. Okay? It is only a special route. It should not be used an escape route to avoid discussions in the legislature. बड़ी आसान सी बात है, समझ कर देखते हैं. When we talk of good polity, we say whose function is to make laws? We say of the legislature. Correct? Who should make laws? Legislature should make laws. Legislature. Who should apply the laws? Executive should apply the laws. Correct? And who should resolve disputes? Judiciary shall resolve the disputes. बड़ी आसान सी बात है, काम बढ़ गया. Right? Now, if something which it is doing, if this power is taken by this agency, so definitely this agency is trying to usurp USURP, usurp power of someone else. ठीक है, in extraordinary situation, it is allowed so that absence of a session shall not become a handicap in the discharge of functions. Correct? Shall be allowed, but not as a general thing. Okay? So, ordinance will not be an example of good polity. ये तो stop gap के लिए दिया है. जैसे आप बंदूक लेकर चल रहे हो. Okay? You have taken a license to a gun. It does not mean you will be using it anywhere. थोड़ी सी लड़ाई हुई और आपने निकाल लिया. That's wrong. That will extraordinary means extraordinary. Firing of police, that's why it will be criticized in a democracy. It will never be appreciated. Extraordinary, you will have to justify and explain. Understanding it, sir? So, whenever we talk that how the organs will be working in a society so that things are carried out in a better manner. Right, sir? So,
Polity we have understood. So polity is understanding what these things do. Third point in that, please proceed. Polity may be described as an example of good polity if the power arrangement is not despotic in nature and is oriented towards progress and development of people. Full stop. Continuing the same point, it should be such it should be such that the rights, RIGHTS, adhikar, the rights are secured to the people and the officials and the officials are checked and the officials are checked from being despotic. Well, stop. Kritika has asked me to repeat the third point. Can someone just type the starting of the third point? I think she missed that. Kritika, I can repeat it, but the grammar will change. I have not crammed my child, you know. So grammar will change, sentence will change. Content will remain the same. Despotic Anshu means निरंकुश, जो बेटा uncontrolled हो. That is despotic, despot, निरंकुश, uncontrolled. जिस पर कोई अंकुश ना लग सकता. अंकुश मीन्स कंट्रोल ना लग सकता हो. Someone who cannot be controlled. Polity may be described as an example when the power arrangement is not despotic. DESPOTIC in nature and is oriented towards progress and development of people. Muskan, thank you very much. Kritika, now quickly see, Muskan has helped us. Whether my pace is, I think my pace is okay. Am I delivering fast?
Beta, your mic, I am able to hear something but not very clearly. Kindly be slightly away from the mic and then speak. Sir, will you repeat this point once again? Legislature should make the laws and executive should execute the laws. Judiciary should apply the laws. Once the point, sir. Okay. That was the initial, I think that was in second point. Legislature should be making the laws. Okay. While executive has the duty of application of laws, while judiciary has the duty of adjudication of laws. इन बच्चों के पास स्क्रिप्ट चली जाती है क्या वैसे? They get it? एक काम करेंगे, we will try to do this. Someone will help us later. What you will do? Avnit, let's do something. फिर बेटा मैं बता दूंगा आपको. How do you study at home and what you are expected to do? At this time, you are expected to be highly attentive. I can understand you are at your place. Okay, so other things may be disturbing you. I understand that very well. So the way is be engaged. Think that you are sitting right in front of the teacher in the class only. Okay. So what you should do is, at present with me, try to just comprehend what is polity, what will be constitution. These are the things which I will be covering today. If you will understand it, 2 marks for pre will be short for you. Okay, and you will have the basic foundation. Because when I use the word Afghanistan, then it will mean to someone that's a traditional premises it means will lead to bad polity. Yes, sometimes they can be. It's not a guaranteed thing that tradition is bad. No, not at all. But tradition can be subjective, and in that everyone's interest may not be served. So that is why legal rational is the best. Something that is rationally provided by the law is the most authoritative and authentic thing. Okay? Nunavat Monica has given the point. Great, thank you. आगे बढ़े बेटा. माई रिक्वेस्ट, अभी एक बार जब लिख रहे हैं तो ध्यान से लिखो, फिर देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, कृतिका, आर यू रेडी? कृतिका, टाइप इट. आर यू रेडी? फाइन. ओके, फोर्थ पॉइंट. Good polity will be expressed in terms of an arrangement, that is based upon well established principles like rule of law, comma, separation of powers, comma, independent judiciary,
independent judiciary, etc. Full stop. Same point in fourth point only. In a good polity, cases of misfeasance, malfeasance, after comma, first of all misfeasance, spelling is on the board, misfeasance, comma, malfeasance and overfeasance. And overfeasance will be addressed effectively by declaring such actions will be addressed effectively by declaring such actions as null and void, by declaring such actions as null and void. Okay, full stop. Now let me explain you. It means fourth point is telling us abuse of power will not be allowed in a good polity. यही मतलब हुआ ना बेटा इसका. If I just try to understand it, it means abuse of authority is not allowed in a good polity, and if someone is doing it, then such decisions or such things will be declared as null and void, okay, on the basis of ultra vires. Anyway, fourth point clear हुआ. इसका मतलब उल्टी बात जो भी होगी वो बैड पॉलिटी है. इफ इन अ पॉलिटी power can be misused, then it is bad polity. See sir, in the times of Adolf Hitler, whether polity existed in Germany or not, it existed. But officers were allowed to even abuse their authority. And it was not for everyone. The things people were discriminated by the system itself. And that's why it perished. बड़ी आसान सी बात है. If a car is having 4 wheels and some other systems, if you neglect any one of them, ultimately the vehicle will stop. I feel sorry about Adolf Hitler that he did not have even a single good advisor. एक भी. फियासेंस का मतलब बेटा लॉ होता है. दीक्षा मदन, फियासेंस एंड सफीना. फियासेंस मीन्स बेटा लॉ, मिस माने मिस फियासेंस, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ. ठीक है बेटा. मेल फियासेंस, एप्लीकेशन ऑफ लॉ विद अ मेलाफाइड इंटेंशन, बुरी सोच के साथ. जैसे किसी ने कुछ कहा, एसएचओ ने कहा मुझे इतने पैसे दे दो नहीं तो तुम पे मैं ये सेक्शन लगा दूंगा. गांव में सुनते रहते हैं ना, ऐसी हो जाती हैं चीजें. सो गलत केस में फंसा दिया. मेलफियासेंस. ओवरफियासेंस इज समथिंग वाज नॉट इन योर जुरिसडिक्शन, स्टिल यू ट्राइड टू अप्लाई योर पावर्स ओवर देयर. फियासेंस बेटा इनमें लॉ रहेगा बच्चे, एंड मिस मैल ओवर.
ये 3 चीजें इसकी डिस्क्राइबिंग है. प्री का क्वेश्चन है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्री. They will ask you which is the example of misfeasance और नीचे लिखेंगे मेलाफाइट से. नहीं, misfeasance गलती भी हो सकती है. आपने एक you all are students nowadays, you are must be hearing that some people have been arrested under these sections. सुना होगा ना 105 this. So later on during the framing of charges a discussion will take place in the courtroom where they will say that sir this particular section will not apply. वो misfeasance होता है. मुझे ऐसा लगा that it should apply, but actually it was not the correct one to be applied. कोई बात नहीं, courts will actually then declare that action null and void and will provide the relief. वो misfeasance गलती से हो जाना. Malfeasance जानबूझकर मैलाफाइड इंटेंशन के साथ काम करना. And overfeasance is when you by chance or deliberately overstepped in the territory of someone else. ठीक है? Okay? जी. Let us be back. So, fourth point is clear. Without any good, how the Germany youth and rule Germany with Rishyuraj. Beta, what I was saying, if you would have been having a good advisor, who were the best financial managers? Jews. Who were having money, who were good at business? Jews. Okay? Who could have managed finances very well? Jews. Why you neglected a particular skill? You are looking to expand, that the population of Germans is increasing. They require some area. ठीक है यार, बहुत एरिया खाली पड़ा है. Go ahead. But अपने एसेट को कभी नुकसान नहीं किया जाता. You never go against humanity. And they went and see ultimately इतने short period में इतनी सारी आर्मी के साथ खत्म हो गए. They lost. Because later on, after 42, they started having financial problems. और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर एक बार शुरू होती हैं, और युद्ध के लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा. You require money by any way to continue manufacturing, to import things, or to carry out the things. You have to require money. Anyway, so against humanity, bad polity, they neglected a particular skill, bad polity. E नहीं आएगा, अक्षय, it will be VOID only. So, bad polity. Then making wrong decisions. You required space for your people. तो एक लिमिट तक जाना था, उसके बाद नहीं बढ़ना था. And then, like Chanakya told, that is Kautilya, make those people also very comfortable. आप डेनमार्क में भी पहुंच गए. Have them with you. Don't kill anyone. Make them your subjects. Let them work for your growth. And things would have been okay. So what is good polity? A good polity will be people-centric. Good polity will never be officer-centric. Good polity will always be people-centric. है ना बेटा? So governance and a constitutional government क्या एक ही बात है? जी हाँ, लगभग एक ही बात है. Because any good polity ultimately will lead to good governance only. If you are having governmental organizations but they are not people-centric, makes no sense. We all are very sorry for what has happened. Okay, few days back, government organization was there, but they somewhere neglected their duties. That's why from our community, okay, that is the students community, we lost unnecessarily 3 lives. Very sorry. We all have been part to the protest. Protest against what? Protest against bad governance. If I cut it out, when we are learning polity, that sir, all the departments are there. Why they act as reaction only? Why they are not proactive? Why they are only reactive?
कुछ हो गया, then everyone is coming. Why not earlier? Create the things that they remain foolproof. Correct? अब हमें समझ में आने लगा what we are going to study. Okay? So we are going to study the features of power arrangement which will make things people centric. ठीक है भाई? एक और एग्जाम्पल लेता हूं before I go for next point. You have heard the term public interest litigation, PIL. ये टर्म सुना है? Okay, fine. Is it mentioned in the Constitution? Tell me. Is the term mentioned? No, it is not mentioned. Correct? Absolutely right. So, do you think the Supreme Court has usurped the power of executive and legislature through this PIL arrangement? मेंस का क्वेश्चन है, आता ही आता है. ओके, 10 में से 3 बार आता है. So do you think that judiciary is becoming too active, TOO, too active nowadays, using the route of PIL and is somewhere interfering in the functioning of executive and in the functioning of legislature? Diksha, Madan, Adarsh, Ranjan, everyone is saying yes sir. कुछ बच्चे कह रहे हैं no. One has written judicial activism. Kumar Shivam is having the question on misfeasance and malfeasance. Shivam, I will come to your question. First of all, let us finish this PIL. ठीक है, एक thought एक समझ लें, फिर पीछे लौटते हैं. See friend, so now you will go back to your basics. That what was good polity? Sir told us good polity is all about that power shall not go abusive. Achha sahab. Who can use powers in the society? So in most of the cases it will be executive. Okay, in most of the cases it will be executive, and okay, lawmaking, they can make laws also which may not be appropriate for some sections of the society. अच्छा, that's why. Fine. अब आपके दिमाग में आंसर सेट है. आप कहेंगे नहीं सर, PIL बुरी बात नहीं है. Why? Till the time PIL is only enriching the process, protecting the rights and making arrangements people centric. It is not bad. And that's why children, it continued. आप देखिए, something that started with Justice Iyer and then well established by Justice P.N. Bhagwati. Late 70s की बात कर रहा हूं, early 80s की बात कर रहा हूं. I'm talking about late 1970s and early 1980s. An arrangement got established. काफी टाइम हो गया. It's sufficient period. Okay, 45 years. So, if in 45 years means almost 5 decades. Now we are having majority government also. For last 10 years we had it. Full majority government. Why they did not come out with a constitutional amendment to check that power? Because it promotes good polity. ठीक है? हाँ, whether it will lead to judicial overreach, वो बाद में discuss करेंगे. That what type of cases it should take. So PIL बुरा arrangement नहीं है. In no way you can say that PIL is a bad arrangement. It's an arrangement that will only assist. ये word दिमाग में डालिए. Okay, so judiciary should be in the assisting role to provide the right path for executive as well as judiciary. कि भैया ये चीज आपसे छूट रही थी, and see this particular thing you are missing, and see because of this certain sections have been unnecessarily facing problems. Got it? Right sir?
तो गुड पॉलिटी, तो जब भी आप एग्जाम में ओपिनियन बनाएंगे, so always think of whether it has promoted good quality or it has been the reason for making some people more powerful. ठीक है, करेक्ट? लाइक पंचायत, मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, पंचायत वर्ड सुना है? पंचायत, राइट? कि दैट पंचायत, एट द लेवल ऑफ पंचायत देयर इज लॉट ऑफ करप्शन. So do you think the development program shall be carried out by the state officials only? अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूं, सोचने का तरीका आपको सिखा रहा हूं, हाउ डू यू थिंक, तो आपको पॉलिटी बहुत इजी हो जाएगी. माई क्वेश्चन कम्स इन मेंस और प्री ऑल्सो, दैट डू यू थिंक दैट स्टेट ऑफिशियल्स शुड टेक ओवर control of development functions as corruption has increased at in panchayati raj institutions? घुमाइए दिमाग को, सोचिए. Yes, someone has raised hand. Madhu. Yes, Madhu, what do you want to say? Please go ahead. Madhu Soni is saying no. Absolutely right. Definitely we should not, because power नीचे देनी है, and if corruption is there, we will try to correct it at that level. We will not try to take back powers to the higher levels. Okay? So it means good polity is associated with, एक और पॉइंट मिल गया हमें जो फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे. वेरी गुड. गुड polity is associated with empowerment of people. लिख डालिए. फिफ्थ पॉइंट, गुड पॉलिटी is associated with empowerment of people. And is based on the principle of centralization. Decentralization, and is based on the principle of decentralization. Decentralization, decentralization. इस बार आना है आपके मेंस में. Those who are, and next time for your pre, very recently government declared a particular day as a black day in polity, the date on which general emergency was proclaimed. You all must have read in newspapers. So, proclamation of emergency, yes, Satya Divas, correct. So, proclamation of emergency is an example of bad polity, it means. Why? When it is in our constitution itself. हम तो ये मान के चलते हैं that whatever is written in the constitution अच्छा ही है. So, the question is, with what was the intention? With what it was used? If it has been used for extraordinary situations and still to keep it people-centric, it would have never been considered as an example of bad polity. But if the idea was to take the powers back to the upper level, it is bad polity. ठीक है सर? So, good polity ऐसे समझ लीजिए. आसान सी बात है, इसको स्टेट मानिए. अगर पावर्स नीचे की तरफ जा रही हैं, if it is giving powers, ये सब किसके एग्जाम्पल है? These are powers. तो this is example of good polity. ठीक है बच्चे? This will be good polity if it is based on the principle of decentralization. On the reverse,
if the idea of the state is to assume powers to itself, okay, then it is an example of bad polity. ठीक है जी, एक्सेप्शनल में चल जाएगा, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. It should not be a generalized principle. President's rule in the state. बहुत सुना होगा आपने. You must all have heard it. That imposition of president's rule in the state. Tell me, example of good polity or bad polity? Imposition of Article 356. Bad. कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 356, बोल रहा हूं मैं, फिर भी आप कह रहे हैं बैड. व्हाई? इट इज वेरी इजी, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग लाइक दिस. सो सेंटर शुड ओनली यूज इट स्पेयरिंगली, एंड दैट टू विद द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द पीपल. दैट करंट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट was not running in accordance with the provisions of the constitution. हमने इसलिए नहीं हटाया कि वहां पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा. बिकॉज दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सम सेक्शन और they were not following the provisions of the constitution. That's why we used article 356, and we promise that within next 6 months we will restore the normal legislature and normal executive. सही है, कोई दिक्कत नहीं, but only for exceptional arrangements, not as a regular principle. Understanding, children? अब तो आसान लगने लगी चीजें. That okay, so polity that will make people empowered, polity that will secure rights of people, polity that will be progressive in nature, polity that will be development oriented, polity that is people centric. पेपर मालूम पड़ गया सर, जीएस पेपर 4 क्या आने वाला है, जीएस पेपर 2 क्या आएगा, एंड व्हाट विल बी द क्वेश्चंस इन प्री. यू नो सिग्निफिकेंस ऑफ अ ट्रिब्यूनल. ओके, जुडिशरी नहीं है ट्रिब्यूनल, इज नॉट अ कंप्लीट कोर्ट, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. क्यों है? अरेंज्ड अगेन टू मेक थिंग्स पीपल सेंट्रिक. यस राजश्री, बिल्कुल मैल्फियसेंस है. इसीलिए आपने अब आजकल देखा होगा बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट आ भी जाता है. ओके, एंड नाउडेज इट इज नॉट यूज्ड. सर व्हाट अबाउट, ओ ऋषि, ऋषभ, सर व्हाट अबाउट J&K? व्हाट इज योर व्यू अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट आफ्टर एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370? Child, that's why everyone has been saying that as far as possible, very quickly the legislative assembly shall be restored there. But J&K was a bit of exceptional case. So in exceptions we are, what will be in the interest of the people? ये ध्यान रखो, छोड़ो सब बातें, 370 छोड़ो, संविधान छोड़ो, सब छोड़ दो, लीव एवरीथिंग. एक चीज दिमाग में रखिए, what will be in the best interest of the people, not of the government, of the people. Not of the bureaucrats, of the people. Not of the politicians, of the people. Ideal ये है. So what will be in the best interest of the people? That should be carried out. Okay? That should be carried out. Power for people, not people for power. Absolutely right. Samia. Got it, children? ठीक है? So bad polity अब आप जानते ही हैं, ठीक इसका उल्टा bad polity. I need not dictate that. There is no point in dictating that. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे that how do we achieve good polity? What are the ways through which, like sir, in ancient times, when you go through history, in front of a particular ruler, it is written Devanam Piya. Okay, and also many historians have used the term Ashoka the Great. पढ़ा होगा Ashoka the Great. In medieval history, you talk about
अकबर दी ग्रेट। क्या ग्रेट है, क्या बात थी भाई? वाई दे आर टर्म्ड ग्रेट? विल समवन लाइक टू टॉक अबाउट इट? आदर्श रंजन, but sir, in situation of wars, emergency is definitely good, my child. वॉर एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है बेटा, पीपल सेंटर की तो है वो भी। एट दैट टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वी इंपोज इमरजेंसी। जी, एनीवे, they administered good polity because of their policy. Policies were in public interest. Okay. Their political rule, ठीक बात है। तो ultimately if I say, if I come out with one of the statements which Kautilya has said and has been used by Ashoka also in one of his inscriptions, his happiness should lie in the happiness of his subjects and should not be pleased by what pleases him, but by what pleases thy subjects. जिन चीजों में उसकी प्रजा की खुशी हो उसी में राजा की खुशी होनी चाहिए, and should be choosing those things only for his policy what will be pleasing his subjects and not what he is pleased by. Okay, ठीक है। शाहजहां भी ग्रेट क्यों नहीं कहते यार? ताजमहल बना दिया, आज तक हम ताजमहल की बात करते रहते हैं। ओके, मूवी भी बन गई, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एनीवे, फाइन। ये शाहजहां भी ग्रेट क्यों नहीं कहते? यूज पेट्रोडेरा लाइक एनीथिंग। दिल्ली फोर्ट, दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, मार्वलस। ताजमहल मार्वलस, नो डाउट्स इन इट। फिर भी शाहजहां दी ग्रेट नहीं कह रहे हैं, अकबर दी ग्रेट। वेरी यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर ऑफ हिज रेड फोर्ट्स, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, कुछ ऐसा नहीं है कि जो खूबसूरत लगे अंदर। स्टिल अकबर दी ग्रेट एंड शाहजहां के सामने नहीं लिखा हुआ है। बिकॉज has done everything for his own interest. Correct. Personal whims and fancies के लिए काम किया। Correct. State coffers, state treasury was used for personal whims and fancies. अकाल पड़ रहा है और आप बिल्डिंग बनवा रहे हो। So the core idea of good polity, it means, will always be directed towards the people because he lacked mercy. ठीक है, सारी बातें हो सकती हैं, these things may be there, but आसान बनाओ बेटा अपने लिए। इट मीन्स अकबर दी ग्रेट ने कुछ जरूर इसलिए ग्रेट कहा होगा, ही मस्ट हैव चेंज द ऑर्डर फॉर समवेयर इन्वॉल्विंग दोज हु अदरवाइज वर नॉट सीन एज बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेट। Yes, removal of jizya, removal of pilgrimage tax, 1564, 1565, बिल्कुल ठीक बात है आशुतोष। अपने ऑर्डर को पूरा बदल लेना। ओके, वी हैड सल्तनत पीरियड, सो इस्लामिक रूल, ही रीडिफाइंड इस्लामिक स्टेट। सो अंडर अकबर ऑल्सो इट वॉज एन इस्लामिक स्टेट, बट विद, एक वर्ड यूज करते हो ना, विद टॉलरेंस। ये वर्ड आ गया, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। एब्सोल्युटली राइट आदर्श, विद टॉलरेंस, एंड इमीडिएटली इट बिकेम एन एग्जांपल ऑफ गुड पॉलिटी। चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ गुड पॉलिटी इज अचीव्ड। तो व्हाट इज पॉलिटी हम जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, गुड और बैड? व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी इट इज? बैड। वेरी गुड, हमें मालूम है बैड थी। ठीक है। औरंगजेब, हाउ वॉज इज पॉलिटी? बैड। करेक्ट, बैड है। अब ऐसी क्या बात है, औरंगजेब वैसे बेटा बहुत ईमानदार आदमी था, नेवर यूज्ड द मनी ऑफ द स्टेट फॉर हिमसेल्फ और फॉर हिज फैमिली, स्टिल वी आर सेइंग बैड पॉलिटी। इसका मतलब कुछ और चक्कर है। शाहजहां इज सेइंग वर्स्ट। व्हाई वर्स्ट? व्हाई बेटा?
Why you are saying worst polity? It means the polity need to have certain features. वो फीचर्स हम देखते हैं. सो आर हेडिंग नाउ विल बी व्हाट विल मेक पॉलिटी अ गुड पॉलिटी. फीचर वो तो हमने देख लिया ढूंढ ढांड के. ये है अब्यूज ऑफ पावर, यस, ऑल दोज थिंग्स अभी करते हैं, समझते जाते हैं. सो हाउ पॉलिटी इज मेड गुड पॉलिटी. ठीक है भाई, करेक्ट. बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं यार हिंदुस्तान का अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा हो सकता है, किसको कह सकते हो? What can be termed as the earliest constitution of India? Vedas, Crown Rule, Niti Shastra, Dharma Shastra, Arth Shastra, Vedas, Dharma Shastra. Ashutosh Tripaঠি's Arth Shastra is the correct answer. Okay? Because you need to understand Manusmriti, कहीं यार डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है तो पीपल सेंट्रिक नहीं है, हटा दिया. धर्मशास्त्र based on subjective interpretation of dharma, uniformity, equality are essential principles. अगर कहीं भी गड़बड़ है तो वो नहीं रहेंगे. अर्थशास्त्र is something which is trying to at that time in ancient time. अर्थशास्त्र का टाइम पीरियड बताइए मुझे someone, so that you understand what time we are talking. टाइम फ्रेम भी दिमाग में रहना चाहिए. 300 BC मौर्यन पीरियड, 300 अर्थशास्त्र. थोड़ा सा और पीछे जाओ आशुतोष. यस, दैट्स द टाइम, दैट्स राइट. आदर्श नहीं बेटा, एकता, नो 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 नो. चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ोगे तो बेटा 247 में कैसे लाओगे बीसी में? नो 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 भाई. अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ठीक है, 325 324 बीसी. उसके बाद इमीडिएटली वी सी रिमूवल ऑफ धनानंद. ओके, एंड दैट्स द टाइम पीरियड. आकांक्षा, ये सब टाइम ठीक है. 325 322 ये सब चल जाएंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट डेट. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस मस्ट बी द टाइम पीरियड, करेक्ट. सो इन दैट टाइम that person said that though it is monarchy, but monarch cannot be abusive, cannot be despotic. Good polity हो गई. When he is saying that even the king need to have the knowledge of the following essentially. क्या क्या बातें हैं? That the king should be well versed in Treyi, Trey. Treyi means 3 Vedas. 3 वेदों की नॉलेज होनी चाहिए उसको. Then the king should be well versed in Anveshaki. Anveshak माने philosophy. The king should be a philosopher. Should have the philosophical ground, so can understand the meta aspect of anything. Then third, the king should be well versed in principle of economics, Varta, applied economics. And fourth, the king should be well versed in Dandaha, that is military science. So राजा को भी ये नहीं कह रहा है कि राजपुत्र हो बन जाओगे राजा. No. He's not saying like this. He's saying prove that you have these things and then only you will be king. And child, if I see from his various adhikarnas, Arthashastra is having 15 volumes, that is adhikarnas, I see that in each of them, king is shown duty bound. राजा ड्यूटी बाउंड है. ऐसा नहीं है कि राजा आनंद से गाने सुन रहा है, वो सब नहीं है. द किंग इज ड्यूटी बाउंड and is having a very tough schedule which starts very early when he is meeting good purushas, that is the spies. तो लगभग सुबह 3:30 बजे if I see in प्रहर, प्रहर जानते हैं
पहला पैर, दूसरा पैर, those who have this understanding of the traditional system. So king will be meeting the Gur Purushas, Vartikas, right in the darkness, so that people are not knowing who is coming, who is moving. And then throughout the day he will be working. Okay, so we say that okay, that's why he is, that can be considered as a constitution. चेक लगाया राजा पे, चेक लगाया सुपरिंटेंडेंट्स पे. सेकंड अधिकरणा is telling us the duties of various superintendents. लाइन लगा के superintendents के टाइटल दे रखे हैं. ओके, that this अध्यक्ष, that अध्यक्ष, various अध्यक्षास are there. And for everyone it has been stated कि तुम्हारी ये ड्यूटी होगी, this will be your duty. So it means a duty bound structure is created, है ना भाई. So it means कौटिल्य ensured कि फियासेंस यानी कि लॉ का रॉन्ग या एब्यूजिव एप्लीकेशन ना हो. So it means कौटिल्य ensured through his अर्थशास्त्र or tried to tell the kings that see, please ensure that the power is not used by your officers also in an abusive manner, and you also king should not use it in an abusive manner. That's right. यही भाई हम देखेंगे अपने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी चेकिंग द पावर्स. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हूं आपको यूपीएससी का, करके देखते हैं कितना समझ में आया. अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ज्यादा आपको, लेकिन मजा आएगा. लेट्स डू इट. Let's do a question and you will give me the answers. All please be attentive. यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं. So please be attentive. Try to see whether you are gaining 2 marks or you are losing 2.66. क्योंकि 0.66 नेगेटिव हो जाता है. 2 तो मिले नहीं, जेब से और चला जाता है. Let's write. Consider the following statements. Consider the following statements. Statement number 1. The purpose of the Constitution is to put limitations on the government in favor of the people. जी, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लिया. सेकंड स्टेटमेंट, the purpose of the Constitution is to put limitations on the people in favor of the government. Fine. Now ABCD are the codes. A, only first statement is true. B, only second statement is true. C, both statements are true. And D, both statements are false. Fine. So I have started having answers, huh?
जितना अभी तक समझा है उसको ध्यान से पढ़ो, सीखो और फिर मुझे आंसर बताओ समझ से, क्योंकि ये मैंने एग्जैक्टली नहीं आपको भी पढ़ाया, लेकिन पॉलिटी समझ गए हो आप कि अच्छा ये पॉलिटी होती है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन का काम गुड पॉलिटी इंश्योर करना होता है, ठीक है भाई। अब आंसर लेते हैं। फाइन, हु ऑल आर विद ए? फाइन, who all are with B? Anyone with B? That only second is correct. Quickly type it. Fine. Who all are with C? जिन्होंने both कहा है. Okay. Fine. And who all are with D? Jasleen Kaur. Fine. Liang Tong. Marek is also with D. The correct answer is A. उद्देश्य केवल एक ही है भाई और कुछ नहीं हो सकता। द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। यूपीएससी में भाई ये क्वेश्चन 5-6 बार आ चुका है। एक बार लिमिटेड गवर्नमेंट पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एंड इट वाज रिटन लिमिटेड गवर्नमेंट। तो यहां लिमिटेड कंपनी वाली बात नहीं है। हियर द आइडिया इज that the government is limited by the provisions of the constitution in regard to its powers. Correct? Ashutosh is asking me a question, sir, but we have some reasonable restrictions even in the FRs. Absolutely right. 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 are providing restrictions. But beta, whether they are in favor of the government, सोच के देखिए क्या कंडीशन लिखी है। पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, है ना। तो आप ही के लिए तो हैं। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ये नहीं है कि गवर्नमेंट शक्तिशाली बना दें। इट्स नॉट लाइक दिस। व्हाई विल आई मेक समबडी मोर पावरफुल? वो तो पहले से ही प्रॉब्लम थी। व्हाई मॉन्टेस्क्यू वुड हैव गिवन द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स? व्हाई ही वुड हैव गिवन? बिकॉज इफ what is the problem with the monarchy? What is the problem? The same person makes the rules, the same person will apply the rules, and the same person or institution will adjudicate the rules. Try to think, आप अपनी पावर कभी कम करना चाहोगे या बढ़ाना चाहोगे? हमेशा बढ़ाओगे। You will actually try to have more and more power in your hand. Human tendency. It's the human tendency. Then, if any dispute comes, so can you give decision against your own self? You will never give it. Principle of natural justice ही violate हो रहा है। तो इसलिए what should be done? We should have separate institutions for all these things. Purpose क्या था? Purpose was this only, that state government shall not be having too much authority and power. तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती विच विल ट्राई टू गिव मोर एंड मोर पावर्स टू द गवर्नमेंट। ओके, वो गलत हो जाएगी। अगर उल्टा हो जाए दैट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल विल बी एम्पावर्ड, सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज द पर्पस। ओके सर, एनीवे, तो अब हम समझने लगे हाउ पॉलिटी इज मेड गुड पॉलिटी। तो अभी एक वर्ड मैंने यूज किया, क्या? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन आई मेक पॉलिटी अ गुड पॉलिटी। ओके, करेक्ट। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन भी यार मैं कुछ भी उल्टा सीधा लिख दूं पाकिस्तान में जैसे है। सो इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो शुड बी, कॉन्स्टिट्यूशन की भी जिम्मेदारी है that it should be based upon certain concrete principles. चलो बढ़िया चीज आपको और बताते हैं। अभी पहली क्लास से बड़ा मजा आएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर सुना है वर्ड? Have you heard this term basic structure? Fine, good. You have heard it. क्या है भाई? Is it defined in the constitution? Whether the term basic structure? No, it is not defined. फिर
क्या चक्कर है यार ये बेसिक स्ट्रक्चर, एंड वी से जुडिशरी इज एक्चुअली यूजिंग इट एज अ सिस्टम टू इंक्रीज इट्स पावर्स, जब चाहे यूज कर लेती है बेसिक स्ट्रक्चर को। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर, व्हाट इज द इश्यू, व्हाट इज इट? दैट्स राइट उत्तेजना, यू आर राइट, बेसिक स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम केशवानंद भारती। बेटा अभी बिल्कुल बेसिक समझो, केसेस में मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी खराब हो सकता है अगर कोर बातें ना मानी जाएं। दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, पाकिस्तान में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, देखो क्या हालत है, वेयर दे हैव अराइव्ड, वेयर दे हैव रीच्ड। निकले तो साथ साथ थे हम लोग, वी स्टार्टेड अ जर्नी टुगेदर, बट वेयर फाइनली दे हैव रीच्ड and where we are. So basic structure is nothing but a doctrine that is associated with good polity features. Anything that will make government more powerful will be wrong according to doctrine of basic structure. तो जिंदगी आसान हो गई हमारी समझने के लिए भाई, what will be good polity, what will be basic structure? So all those features which have the purpose of empowerment of people and to create a progressive and development centric government for the people will be aspects of basic structure. Why independent judiciary has been an aspect of basic structure? For this reason, because from where people will ultimately get their grievances redressed, जुडिशरी से ही होंगे। तो अगर जुडिशरी कंट्रोल में हो गई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, तब तो बात नहीं बनेगी, देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। इफ जुडिशरी विल बी इन द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। फॉर दिस रीजन एनजेसी अमेंडमेंट वाज स्ट्रक आउट। पता है आपको, गवर्नमेंट, Modi government in its first term brought an amendment to the constitution, NJC बनाया था। जुडिशरी ने कहा भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाहर करो, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो अब हम समझ गए कि बेसिक स्ट्रक्चर समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। Such features which make a constitution enabled to check the powers of the government will be good features of basic structure। ठीक है भाई, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्यों पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, ऑल दोज फीचर्स, कुछ भी हो सकता है, सेक्युलर भी, करेक्ट, केशवानंद भारती। देख आर्टिकल 26 नहीं आप हटा सकते, छीन नहीं सकते। सो ऑल द फीचर्स विच गो फॉर well-being of people। आगे एक बहुत बड़ी बात सिखाऊंगा, इससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा। आर्टिकल 31C, जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है अभी टेंशन ना लेना, कुछ सीख रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से ही, is saying that if any law is made by the parliament or state legislature to give effect to the provisions of Article 39B and 39C, and if they are in violation of fundamental rights, still they will remain। रिश्यू नहीं, ये भी समझ रहे हैं आप, ये चीज नोट कर सकते हो, ओके। क्योंकि जो भी मैं यहां पर बना रहा हूं, ये चित्रकारी आप ही के लिए है, जो भी कुछ है, ये पेट्रोड्यूरा शाहजहां का नहीं है, अपने लिए नहीं है, आप ही के लिए, तो आप समझने के लिए हो सकता है, राइट। सो द क्वेश्चन इज कि भाई ऐसा लॉ, अदरवाइज आर्टिकल 13 इज सेइंग एनी लॉ which will be in violation or inconsistent with the provisions of part 3, that is fundamental rights, will be automatically declared void। फिर हमने 31C में लिख दिया ऐसा नहीं, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इफ
the law has been made to give effect to provisions of Article 39B and 39C, then such laws will remain valid even if they are violative of fundamental rights. क्यों? Well-being of people. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है. लोग कहते हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर तो सर केशवानंद भारती में आया 1973, उससे पहले तो बिल्कुल मनमानी चल रही होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. I take you to the First Amendment and then the cases in the Supreme Court. Zamindars were coming and were saying, landlords, that how our land can be taken. It is not allowed. But then Supreme Court saw what? शंकरी प्रसाद केस की बात कर रहा हूं, नाम इसलिए नहीं लिया कि बच्चे डर ना जाएं. शंकरी प्रसाद केस, बिहार के एक जमींदार थे बेटा. उन्होंने कहा साहब जब आर्टिकल 31 में आपने राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो ये सरकार ने क्या आर्टिकल 31A में बना दिया कि दैट इफ इट इज फॉर इफ यू आर एक्वायरिंग लैंड ऑफ जमींदार्स एंड एस्टेट्स, ESTATS, एस्टेट्स माने संपदा ऑफ प्रिंसली एंड अदर थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड रिफॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं, then it will not be considered inconsistent and it will not be declared void. शंकरी प्रसाद ने कहा ये क्या बात है, अभी 1950 में you started the constitution and then you brought an amendment, एक साल में 1951 and now you are trying to take our property from us. सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने क्या कहा, it is for well-being of the people. So they asked the counsel, means advocates of शंकरी प्रसाद, कि भाई शंकरी प्रसाद की अपनी खरीदी हुई जमीन नहीं थी, ये तो जमींदारी सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट से जो शुरू हुआ उनको मिल गई थी, उनकी अपनी जमीन थोड़ी थी. सो हिज राइट्स वर इलीगल, हिज राइट्स वर नॉट लॉफुल. अब उन्होंने उस समय लॉ बना दिया, बट दैट लॉ वाज नॉट राइट बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द वेल बीइंग ऑफ द पीपल. है ना बेटा? सो टू से, अगर यूपीएससी पूछे दैट प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो, judges of Supreme Court or Supreme Court of India somewhere has been protecting the interests of those very features which later on were elaborated in basic structure, तो आप शंकरी प्रसाद केस डाल सकते हो, बिल्कुल डाल दोगे, नहीं तो वहीं पर कह देते. They said no 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 it is okay because क्या रहा जजेस के दिमाग में, वेल बीइंग ऑफ मासेस, कि नहीं भाई लैंड रिफॉर्म्स तो बहुत जरूरी है, ये होने ही चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज सम पीपल विल कंटिन्यू टू बी एक्सट्रीमली पुअर. ये बात सही नहीं है, दिस विल नॉट ऑपरेट, दिस विल नॉट वर्क. गॉट इट सर? सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होंगी हमारी चीजें, व्हाट विल बी द फीचर्स विच विल चेक द पावर्स. अब मैं उन प्रिंसिपल्स को लिख लेता हूं और लेट्स राइट हाउ पॉलिटी इज मेड गुड पॉलिटी, ये हेडिंग डाल के अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, सो दैट वी हैव थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट विद अस. थैंक यू. लिखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is considered as the thought process, constitutionalism is considered as the thought process that led to the idea of a state, that led to the idea of a state where
The power organs, where the power organs use their authority in a rational manner, guided by the principles, in a rational manner, guided by the principles guided by the principles of a good polity. Full stop. The legitimizing premise, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट होता है ना, तो देखते हैं कौन सी लेजिटिमेट पावर होगी, कौन सी लेजिटिमेट होगी. द लेजिटिमाइजिंग प्रिमाइस should be such provisions of laws, and constitution which make the functioning of the government, free from whims and fancies, and they operate Muskan whim, WHIMS, whims, and fancies, FANCIES, and they operate for the sake of people, full stop. Anjum Sania sir, please repeat principle से आगे. Oh God. बेटा कोई हेल्प करो अंजुम की क्विकली, व्हाट शी इज आस्किंग. Anand Kumar, what is your question? Or good polity? Of a good polity, beta. Principles of a good polity. Safina has asked me whims and fancies. Whims बेटा मनमाना विचार, ओके, मनमाना अपना जो सोच लिया. एंड फैंसीज भी आप मनमाना ही है, जो आपको जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा है सफीना? टेल मी. गुड. His decisions have been generally criticized.
related to shifting of his capital, okay, his currency idea, शाबाश. So shifting of capital में सफीना, what was the issue? Why you are not very happy with that decision? अभी आपको समझ में आएगा. Was it based on rational basis? कोई आपको आकर ये कह दे, दो दरबारी, कि सर दिल्ली में तो सर देखो बहुत नजदीक है आपके फ्रंटियर्स, ओके, सीमाएं, फ्रंटियर्स माने सीमाएं, देश की सीमाएं, एंड सर एक काम करें, अगर सेंट्रल इंडिया में पीछे कहीं कैपिटल ले चलें तो तुगलक डायनेस्टी हमेशा चलेगी. So will you take the decision on the basis of such fools? People may say anything. Will it be okay to, and suppose you are taking the capital, will you ask the people also to march? Definitely no. अगर तुमने वहां पर अपना एक हेडक्वार्टर फंक्शनिंग बनाना भी है तो 20, 50, 100 आदमी चले जाओ, जहां ट्राई करके देख लो. That's all. Why will you allow that complete shifting? अजीब बेवकूफी थी, विम्स एंड फेंसिफुल था. ओके, विदाउट, बस अपना सोचा और चल पड़े. आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस टोकन करेंसी मच. था वो भी, वो वेल एग्जीक्यूटेड नहीं था. दैट वाज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड. बट शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि इसके पीछे आफ्टर थॉट है, कोई कुछ नहीं है. जस्ट टुक ऑफ अ डिसीजन एंड सेड वी आर गोइंग इन ए विम्स एंड फैंसीज बोलते हैं. गॉट इट नाउ? फाइन, लेट्स नाउ proceed. Constitution considered as the third part related to the idea of state. Okay, thanks. Ekta has given to others. So children, now we have to see that इस constitutionalism में कौन कौन से thought आए, right? Different thoughts. Like if I ask you, by Montesquieu was a thinker in France. क्या बड़ी बात कर दी उन्होंने constitutional की? What he said, something big that has helped the constitutionalism thought. He said one thing, that from my experience, I have learned one thing, that till the time the kings will continue to have all the powers with them, it will not be possible for the people of France to live in peace. यहां के लोग शांति में नहीं रह सकते. अब थॉट, कुछ लोगों ने मॉन्टेस्क्यू साहब से पूछा that what type of power arrangement you are thinking. He said, I have understood that power can be easily classified into its three dimensions. One, those who will be making the rules, rule making department. Number two, those who will be applying the rules, rule application department. And number three, those who will be adjudicating the disputes, rules adjudication. भाई ये तीन चीजें हैं. If you can separate them, मॉन्टेस्क्यू को नहीं पता था उस समय कि हम लेजिस्लेचर बना लेंगे, ये कर लेंगे. उसने तो बता दिया कि देखो मेरी इस समझ में बात आ गई है कि ये तीन चीजें हैं which go in functioning of the state, and till the time these three functions, these three powers will remain with the same person, it will not be possible for anyone to live in peace. ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहां की फ्रांस की जनता नहीं रह पाएगी शांति में. Always kings can be exploitative, sometimes for their queens, sometimes for their prince, sometimes for the princess.
जो मन करेगा वो करेंगे, बिकॉज यू हैव नो ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा, जब ये चीज धीमे धीमे आगे बढ़ी, देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। जरा इंग्लिश चैनल क्रॉस करके देखते हैं। वी हैव रीच्ड इंग्लैंड, ओके, फ्रांस से जरा सा इंग्लिश चैनल क्रॉस करिए, आप पहुंच गए इंग्लैंड। एंड इन इंग्लैंड वी आर सीइंग दैट ट्यूडर डायनेस्टी, ट्यूडर्स, TUDORS, ट्यूडर्स, हेनरी सेवेंथ, हेनरी एट्थ, ओके, ये सब ट्यूडर डायनेस्टी के ही हैं, क्वीन एलिजाबेथ। तो जब हम ट्यूडर्स पे पहुंचते हैं, देन वी सी दैट ट्यूडर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम देयर सो टर्म नोबल्स या बिग लैंडलॉर्ड्स, कुछ भी कह लीजिए आप। So they were demanding that no king, if you want to be the king and if we have to, law हम बनाएंगे, we will make the law। तो आप कहेंगे कि सर हवा बहने लग गई है। If I talk of Tudors, what period I am talking? Somebody from history, वर्ल्ड हिस्ट्री बताओ जल्दी से। ट्यूडर डायनेस्टी की बात कर रहा हूं तो कब की बात कर रहा हूं? 1520s की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, शाबाश, पुनर्जागरण, बिल्कुल, रेनेसां। ओके, सो नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि पैसा है उनके पास। ऐसा नहीं है कि राजा या वहां के लोगों को देवर पीपल सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक कोई नहीं है। पैसा क्योंकि एक आदमी के पास नहीं है, काफी लोगों में कई सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, बटा हुआ है। सो दे वांट टू कंट्रोल। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सुना होगा यार इंग्लैंड में। व्हाट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स? हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द सेम थिंग, कन्वेंशनल सिस्टम था। सो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ वॉइस, आवाज तो उठी। एंड हियर इन द 16th century व्हेन आई टॉक ऑफ मॉन्टेस्क्यू, इस आदमी ने तो पूरा विचार ही बना लिया। ही सेड दैट देयर शुड बी 3 organs and they shall be operating in their domain separately। ठीक है बेटा? So 3 organs of the government will be there, and when I see these 3 organs, then I understand that okay, we want that the powers, इसीलिए मैंने ऑर्डिनेंस को क्या बताया? बैड पॉलिटी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात होती है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी स्टडी हियर इज ओके, सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्रोनोलॉजिकली भी भाई पहला है। दो यूपीएससी इज नॉट आस्किंग दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ आई से क्रोनोलॉजिकली हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, 16th 17th सेंचुरी से बात होनी शुरू हो गई। They started talking about it, that if the power will be separately established, then there will not be any problem। Correct? अभी डिक्टेट नहीं किया। मैग्ना कार्टा, आशुतोष, अब आप 13th सेंचुरी पे जा रहे हैं। मैग्ना कार्टा, माई चाइल्ड, विल बी एसोसिएटेड विद राइट्स। ओके, राइट्स। और उस समय वो लागू नहीं हुआ बेटा, वो पिटीशन ऑफ राइट्स बाद में आएगी। पिटीशन ऑफ राइट्स व्हेन इट विल कम, इट विल बी कमिंग लेटर। 13th सेंचुरी में जब आशुतोष, व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्ना कार्टा, तो राजा का मन अधिकार देना नहीं था लोगों को ना, वो तो पॉलिटिक्स खेल रहा था, राजनीति थी। उसने कहा, क्योंकि कंट्रोल करना था किन पे? फ्यूडल लॉर्ड्स पे। कोई राजा वाजा को कोई सुनता नहीं था, कोई नहीं सुनता था। फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत पावरफुल थे, पैसे वाले लोग थे। सो राजा ने एक ट्रिक निकाली मैग्ना कार्टा के नाम से कि हम अब ये जारी करेंगे, पीपल विल हैव राइट्स। सो मेन आइडिया कंट्रोल करना किसका था? फ्यूडल लॉर्ड्स का। इसलिए वो लागू ही नहीं हो पाया। इट नेवर वॉज
actually came into being in the day of the light नहीं देखी उसने. Constitutionalism, Nunavut, simply means the theory behind a constitution. Constitutionalism. Okay? Having a constitutional government is constitutionalism. Okay? The principles which guide the constitutional functioning is constitutionalism. हिंदी में संविधानवाद. दिशा, फियासेंस अगेन. बच्चों को फियासेंस बहुत टेक्निकल लगा है. इस वर्ड में लगा है, ये यार टेक्निकल है, किसी पे जरा इंप्रेशन बनाएंगे. फियासेंस का मतलब बेटा लॉ. ओके दिशा, बढ़िया बेटा. फियासेंस सिंपली मींस लॉ. मिस, मैल, ओवर, वो बेटा अगर मिस माने रॉन्ग एप्लीकेशन, एरर है ना, एरर, मिस, एरर. और MIS एक ही एस, दो एस मत लगाना. हाँ. और दूसरा क्या है, मेलाफाइड. मैल, दुर्भावना. मेलाफाइड का मतलब बेटा होता है दुर्भावना से प्रेरित, मेलाफाइड इंटेंशन. तो वो क्या हो गया, व्हाट इज दैट, malfeasance. Overfeasance is something that was not in your jurisdiction and you have gone for it. That is overfeasance. Legitimizing. वर्ड सुने होंगे, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट सुने हैं. वैध और अवैध. यस. तो लेजिटिमाइजिंग माने वैधता. कौन से आधार पर वैध मानूं, हाउ डू आई कंसीडर इट. How do I consider it that it is something that is valid, it is legitimate, it is not illegitimate, something that is not lawful. Sir, how will we differentiate among them? किस में differentiate करना है दिशा? Simran is still asking me meaning of whims and fancies. Whims and fancies, मनचाही, जो भी आपका मन करे, फैंसीफुल बिहेवियर कहते हैं ना. दिशा, यू हैव टाइप्ड मी अ क्वेश्चन, सर हाउ विल वी डिफरेंशिएट अमॉन्ग देम. किसमें डिफरेंशिएट करना है, क्विक. फियासेंस. बेटा अभी तो मैंने बताया ना, मिस फियासेंस कहां गया भाई वो. मिस मीन्स एरर ऑफ लॉ, मैल मीन्स मैलाफाइड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एंड ओवर मीन्स विदाउट हैविंग जुरिस्डिक्शन. ये सब चीजें लौट कर आएंगी अभी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटी टू यू. ये सब कुछ लौटेगा, एवरीथिंग विल कम अगेन. बट व्हाट इज पॉलिटी ये नहीं दोबारा पढ़ेंगे, बस ये आपने आज समझना है. ओके. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, चलेगा अभी. So today what was the main purpose was to understand what will make a polity a good polity. That's right. That is what we wanted to study. कि भाई bad polity भी हो सकती है, good भी हो सकती है, और good की तरफ हम चल पड़े हैं. That is what we have started. And the first principle that we are trying to talk about is, so what is a constitutionalism or constitutional arrangement which attempts to provide a system that will not be despotic in nature, will not be overstepping, will be people centric, will protect the rights of people. ठीक है, वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा. अब उसके फीचर्स लिस्ट आउट हमने करने शुरू किए हैं. सो फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर्स ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हेडिंग डाल सकते हैं और लिखना शुरू कर लेते हैं. फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स.
Separation of powers. G. This is one of the most important principle. This is one of the most important principle for achieving limited government. लिमिटेड गवर्नमेंट को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लीजिए, फॉर अचीविंग लिमिटेड गवर्नमेंट. Full stop. This principle simply states that power of the state shall be separated in three essential functions. Number one, legislation. Number one is legislation. Making of laws. कहीं पे रूल राइटिंग आ जाए वो एक ही बात है. ओके, मेकिंग ऑफ लॉज, लेजिस्लेशन. नंबर टू, एग्जीक्यूशन और रूल एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ laws. And number three is judiciary. Adjudication of disputes. आशुतोष त्रिपाठी सिंह, डिस्प्यूट्स. बेटा किसी भी तरह का हो सकता है ना बेटा, होता तो डिस्प्यूट ही है ना. क्वेश्चन, व्हेन अ क्वेश्चन हैज अराइजन, more than one opinion is there, my child, and the question of law is involved, then who will come? Judiciary will come. ठीक है, एक वर्ड मैंने बोला, क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व. बड़ी बढ़िया सी चीज है अगर ये याद रह जाए तो. आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट इज मेकिंग रेफरेंस, ओके, टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का. अब फिर वहां यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि भाई ये बताओ, वेयर यूपीएससी इज बाउंड टू गिव एडवाइस एंड वेयर यूपीएससी इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस.
आप ऐसे ही बता दोगे बिना पढ़े कि सर वेयर द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज देयर इट इज बाउंड टू गिव एडवाइस, देना पड़ेगा। एंड वेयर द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट देयर, कोई पॉलिटिकल मामला है कुछ है तो छोड़ देगा, फिर उसकी इच्छा है अपनी सलाह दे या ना दे, सही है ना। अगर मेरा ही कोई फंक्शन है तो भाई मैं बाउंड हूं ना। अगर मामला ये है कि ये लॉ की बात आ गई कि सर ये क्या चीज है, लॉ में ही दो ओपिनियन की बात आ रही है, तो नाउ एंड प्रेसिडेंट हैज मेड अ रेफरेंस, देन दे विल हैव टू गिव। कितनी आसान सी बातें होती हैं, कहां रटा रटा के पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे ही याद हो जाएगी कि अच्छा सर जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट्स, और कहां पे आएंगे, जनरली ऑन द मैटर्स ऑफ एरर ऑफ लॉ, जनरली ऑन द मैटर्स ऑफ एरर ऑफ लॉ दीज थिंग्स विल बी देयर। Getting it? Fine, sir. So, ये क्या है? What is this? ओहो, cover. Till tomorrow, ना? ठीक है, no worries. We are about to finish also. So, sir, the first principle that we have understood, which is a foundation-like principle of the constitution or a limited government, is separation of powers. Yes, please tell me. Sir, actually, I'm having small query that regarding NCRT. If we are not right now, we have not referred the NCRT of Polity. So, by seeing these lectures, that is enough, or else we have to refer to NCRT? Child, see, when I am teaching, I am using NCRTs for sure. I am using IGNOU notes. I am using mostly the Constitution, judgments of Honorable Supreme Court. Okay, this is what I will be using, and even some of the laws which the government is coming out. Now, this question was asked from me earlier also. Sir, what we should be doing back at our home? Beta, it is always good to go through NCRTs. Like tomorrow when we will be talking, what do we mean by liberty? What do we mean by equality? If you have gone through, if you have time, then it is good. Otherwise, do not worry, everything will be in your class notes. In polity, my assurance, UPSC will not be asking even a single question out of your notes, but notes are always highly concentrated. So that is why it is always good to go through some other books also and add something if you want to add to your notes. But basic final Bible should be your notes only. Safina has asked me about a guide. Lakshmikant beta is a guide and it is definitely good. It's not bad. बिल्कुल खरीदिए. Go through it. Now, अब मैं आपको बताता हूं कौन सी बुक्स आप ले लें. Okay? Sir, if we do NCRT then not NCRT. If we do Lakshmikant, नहीं बेटा, NCRT is philosophical discussion. How can you miss NCRTs? आप नहीं मिस करेंगे एनसीईआरटीज. या तो क्लास डिस्कशन पूरे ध्यान से सुनिए और एनसीईआरटी हो जाएगी. बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटीज फॉर श्योर, बट ऑफ कोर्स एट अ हायर लेवल, बिकॉज आई विल बी यूजिंग हियर नाउ कोर पॉलिटी फ्रॉम जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स एंड एवरीवेयर. ओके, तो हम सीधे अप्लाइड लेवल पे अब यूपीएससी पे आ गए हैं. That at UPSC usable knowledge हम ले रहे हैं. Now I will not take time in going in unnecessary details. Necessary में सब में जाऊंगा. So don't worry. If you have gone through it, it is very good. If you have not gone through, then also do not worry. Pay attention to the class and whenever find time, go through it. Revision सा लगेगा. जैसे एक मूवी को आजकल बेटा सारे आपके OTTs हो गए हैं, तो फिल्म्स के रिवीजन करे होंगे आपने. सम गुड मूवीज यू मस्ट हैव रिवाइज्ड. वही होता है कि अरे सर ने बताया था, हाँ हाँ यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इट इज वेरी गुड. समबडी इज गोइंग थ्रू इग्नू, तो भी मजा आएगा उसको. ओके, और एनी बुक यू विल एंजॉय, इवन लक्ष्मीकांत. सो दीज आर गुड बुक्स. अगर पढ़नी है तो एक गाइड बुक ले सकते हैं. लक्ष्मीकांत इज डेफिनेटली अ गुड बुक, इट्स नॉट अ बैड बुक. देन यू शुड टेक, एक चीज और कहूंगा मैं, बेयर एक्ट.
बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेयर एक्ट का मतलब होता है बेटा जो उसमें सीधे सीधे एक्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन का। लेटेस्ट खरीद लेना इसका एडिशन जिसमें नए अमेंडमेंट्स आ गए हो। ओके, परचेज इट्स लेटेस्ट एडिशन एंड डोंट परचेज अ कॉस्टली वन। यूनिवर्सल लॉ की बुक सस्ती आती है, जो लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन जो करते हैं उनकी ले लीजिए। लेक्सिस नेक्सिस शायद महंगा है। I will prefer to have universal law of obligation. If somebody is having it, it's good because law तो law ही है, कोई problem नहीं है। Sir, from which class we should start studying NCERT books? यार तुम एक पॉलिटिकल थियरी पढ़ लो बस, ठीक है, बाकी छोड़ दो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, डोंट वरी। You just go through a book, political theory, 11th की है शायद, उसको देख लो, बात खत्म करो, लीव रेस्ट ऑन मी। बाकी टर्म्स पढ़ने के लिए आप 8th से पढ़ सकते हैं, अगर कोई फिर भी पढ़ना चाहे, फ्रॉम 8th यू कैन स्टार्ट विथ, उससे पीछे मत जाना, कोई पॉइंट नहीं है, बार बार वही आएगा। हिस्ट्री में तो यस वी से, एंड ज्योग्राफी वी से फ्रॉम क्लास 6th, in geography especially, but in polity 8th is okay, 9th something, 11th political theory is good one. Fine sir, only these two books enough, more than enough ekta beta। क्लास का टाइम 2 घंटा है, 2.5 घंटा है, हाँ 1 बजे तक का था, मतलब लेट शुरू हुई है तो 2 घंटे की है ना, ठीक। फाइन फ्रेंड्स, J.N. Pandey for Constitution। अरे बेटा, I am not promoting anyone, I am not discouraging anyone। Yes, D.D. बासु ही पढ़ लो, फिर J.N. Pandey पढ़ रहे हो तो अभी बेसिक ले लो यार, एक go through it, purchase a basic book and that will be very helpful। So do not purchase, see if institution has provided, have that, don't purchase any other book। Lakshmikant has been provided by the Constitution, okay, that's great, sufficient, one Bayer Act, so then purchase one Bayer Act in addition, and if that also has been provided by the institution, no worries, otherwise purchase that। I think 100, 200 or 150 rupees must be। Okay, Adarsh Ranjan, sir, they have sent us, and that's very good. Institute has already helped you. Why you are unnecessarily reading things again or purchasing things again? Rest we will take care in the class. Please see, when I speak, it is an oral communication. You are hearing only sounds, so need to be attentive. Don't be in hearing mode, be in listening mode. First class only I am telling you. Otherwise you will miss lot of things. Oral communication is very quick, is very good for comprehension, but if you are not very attentive, you are likely to miss certain things. So you may be at your place, home, room, wherever you are, you have to ensure that for these 2 hours you are with me only, nowhere else. Undivided attention. Okay? Fine. So tomorrow we will continue with it, and today I have introduced the subject, so I think tomorrow we can gain some pace, and in terms of asking me a statement to repeat, I can repeat it, but grammar will be different. Same sentence I may not be able to repeat. So if it is okay with you, you can ask me. Otherwise, you can just take the help from other friends who can type it for you. Thank you very much. God bless you all. And work with the idea that 16 of 16 questions, I am not happy with 12 questions. Any of my student will never mark less than 12-13. 80% तो आएंगे ही आएंगे आपके. But why not have 100%?
Bye bye. God bless you. Thank you very much.